very severe cyclone Pilin has just started crossing the coast, very close to Gopalpur. Reported wind speed is 200 km/h. It is, while crossing entire eye, it may take about an hour or so. There may be slight increase in the wind speed, maybe about 10-15 km/h while it is crossing the coast. Heavy to very heavy rainfall is being reported along the entire coast of the affected region, that is from north coastal Andhra Pradesh to Odisha coast, and also interior parts of Odisha are getting heavy to very heavy rainfall. As told earlier, that another 6 hours it will remain as very severe cyclonic storm, and thereafter another 6 hours there is no change in both the manner in which the intensity will fall and the movement. Post landfall, the rainfall, as mentioned earlier, there is no large change, and even after 24 years, another 24 hours rain will be there, though moderate, over the East India larger parts. Sir, what time sir it takes to be? अभी तुरंत ताजा आप पका के लाए हैं। चक्रवात पिलिन उड़ीसा तट गोपालपुर के पास अब तट पार करने लगा है, और इस वक्त जो हवा की गति आंकी गई है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तट पार करने में इसे तकरीबन 1 घंटा लगेगा, और इस दौरान हवा की गति में थोड़ा सा इजाफा होने की संभावना है, यानी 210 के आसपास ये हवा हो सकती है। जहां तक वर्षा का सवाल है, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर भारी बारिश हो रही है, और उड़ीसा के अंदरूनी भागों में भी बृहत्तर क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। लैंडफॉल के आगामी 6 घंटे में इसकी ताकत इसी श्रेणी में रहेगा, हालांकि हवा धीरे धीरे कम होती जाएगी, और 6 घंटे के पश्चात ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रहेगा, और उसके पश्चात ये डिप्रेशन रहेगा। यानी आगामी 24 घंटे तो जैसा कि पहले बताया गया था बारिश रहेगी, उसके पश्चात भी 24 घंटे यानी अब से 48 घंटे पूर्वी भारत में बारिश रहेगी। जहां तक स्टॉर्म सर्ज का सवाल है, ये 3 से 3.5 मीटर जैसा कि पहले आंका गया था वैसी रहने की संभावना है। But Mr. Rathod, sir, the intensity of this cyclone, sir, what you were measuring or what you were expecting, sir, is it more or is it less? No, intensity is what we predicted was T6.0, and it is T6.0. So it is that deadly, sir, because you were saying that it is of level 4 and it could It's really level cause 6, massive damage. level 6. So yes, it is. तो सर फिल्म की आई की बात की जा रही थी कि अब पहुंचने वाला 6 से 8 के बीच में, क्या वो बढ़ गया है? कब तक पहुंचने की जो आई की हम लोग बात कर रहे हैं? हम वही आई की बात कर रहे हैं कि अब वो तट के ऊपर अब इसको किस किया है। सर, ये आप मान रहे हैं कि ये और ऊपर तक जाएगा? नहीं, एक बार जहाँ कितने किस, राज्यों में मतलब इसका ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है? हाँ बारिश केवल बारिश होगी? हाँ बारिश। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। जहां तक विज्ञान का सवाल है और अगर प्रेक्षण की कोई वैल्यू है तो जो मैं बता रहा हूं वो है। Excuse me, sir. You said the wind speed was 200 kilometers an hour as it crossed over to the coast.
previously you were saying it was 220. Does that mean that it's weakened slightly as it? Not exactly. I mean, we were our prediction was that wind will be 210 to 220 kilometer per hour, gusting up to 235. And the observation at the instant is 200 kilometer per hour. Still, there is a scope for further improvement. तो सर ये आप मान रहे हैं कि 1 घंटा और जो है वो काफी जो है वो गंभीर बात होगी? देखिए, गंभीर तो अभी आगे और गंभीर रहेगी, क्योंकि बारिश तो अभी पिछले 6-8 घंटे 10 घंटे से शुरू हुई है. अब जितनी जैसे बारिश बढ़ेगी तो उसी तरह से जो बाढ़ की बात है या और बातें हैं, और अभी कोई खतरा टला नहीं. इसका पार करने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत अब सब हो गया ठीक. तो सर कितने घंटे तक ये हो? मैंने निवेदन किया 6 घंटे एक अवस्था रहेगी, उसके 6 घंटे दूसरी अवस्था रहेगी, फिर 12 घंटे तीसरी अवस्था रहेगी. अच्छा, तो 6 घंटे तक ज्यादा आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? 6 घंटे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसके 6 घंटे बाद में साइक्लोनिक स्टॉर्म, और उसके बाद में And sir, the epicenter or the point here is Gopalpur, isn't it, sir? very close to Gopalpur, Very close. slightly south, very close, very close. This assessment that was made was that the eye of the storm will be right? Close. We said Kalingapattanam to Paradip and center about around Gopalpur, around. ऑडियो नहीं आ रहा है. Yes, actually, in this large storm, always there are embedded cells of very severe clouds. We call them cumulonimbus clouds, and they have their own structures. And in that structures, there are downdrafts which give squally winds, which we call as gusts. तो वो जो झोंके आते हैं, और वो 1-2 इतना बड़ा है तो उसमें सैकड़ों इस तरह के क्लाउड मासेज होते हैं, और जो जहां आएगा, जहां जिस दिशा में वो झोंका देता है, तो अब तो इसको इसीलिए हम कहते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल विंड स्पीड. इसका एक एवरेज निकालते हैं. एक जगह कोई पूरे इतने बड़े भूभाग में एक समान चीज नहीं होती है. Sir, there have been massive preparedness on your predictions, on the IMD's predictions. We have seen there have been a massive movement of people. More than 5.5 lakh people have been displaced. So, sir, now what are your predictions that for how long people should really not come back? Are there any aftermaths of this? You have already said 24 hours, but would you prefer that people shouldn't come back till 48 hours or 72 hours? Or is it safe to come back after 24 hours? Once the story unfolds, then it is a game of, because now everything is on ground. It is ground truth. It's unfolding as we speak. Yes. So now it will depend as to how rain is impacting on different terrains. It will have a different bearing and so on and so forth. So and how much damage it cause. अगर आपका घर उड़ गया, अब मैं आपको कहूँ वापस घर जाएंगे, तो आप नहीं जाएंगे, आप वहीं रहेंगे. So it's a very complex thing. Sir, can it be termed as a super cyclone? No. ऑडियो नहीं आ रहा है. Landfall has started happening, started happening, and since this eye also has 15 kilometers, so it is moving with that speed. So from one end to another end, 1 hour. Yes. So do you have any more accurate assessment of the storm surge now as it comes on land? No, not yet. When will you be able to give a figure of what that level is? Now, normally this is done after the storm surge. This is no prior to it. Sir, what are the parameters for a super cyclone? Because there was a lot of 220 kilometer maximum sustained wind. If it is crossing that limit and gusting up to even higher levels, then it is there. So right now it's 200 plus. 200. And gusting up to 240. No. So even if it is 219, technically it is not. Got your point. But sir, the intensity will remain for 6 more hours. Yes. But now intensity, you see, even a very severe cyclonic storm has a wide window of the wind speed range. It is 120 to 200. 120 to 220.
So though with landfall the winds will start reducing, say if the peak wind maybe even if I presume 210 or 15, every hour there will be decline of 10 to 15 kilometer or around that for 6 hours. So maybe even so, therefore till it remains 120 we definitely call it as very severe cyclonic storm, and thereafter it becomes. So there is a wide range, wind speed will decline, but it remains in that category. Gradually, sir, it will intensify into cyclonic storm tomorrow. It will de-intensify into. Yes, right, sir. So less the wind speed doesn't really mean that the destruction of Yes, less the wind speed, lesser the destruction, obviously. 210 to 220, gusting up to 235 to 40. मैं बोलते बोलते याद हो गया. हाँ. हाँ. ऑडियो नहीं आ रहा है 210 में और 200 में कितना अंतर है, कोई उनको करके बताओ यार. 10 कम है, 10 कम है. कोई फर्क नहीं पड़ता 210 हो कि 220 हो, यार क्या फर्क पड़ता है. और अगर हवा का एक कोई ये उड़ करके 180 में भी किसी के सर में लग गया तो उसके लिए तो तबाही हो गई. That's We it. are not science students, right? We are like general reporters. So we just want to know exactly what Right. how it makes. Great. So could you give us an estimate for how long is the stretch of coastline that's facing dangerous winds now, from sort of top to bottom? If you took the In terms around of the eye, how kilometers, kilometers, 150. 100 to 100. Up to Paradip, there is gale wind speed, 35 knots or more. 100 to Up to Paradip, from Gopalpur to Paradip, there are gale winds, and down south from Gopalpur to Kalingapattanam. roughly how many? Difficult question. Yeah, it will be around 150 kilometers. That's the danger zone is about 150 kilometers wide. Yeah. Thank you. सर तो अब कब अपडेट की उम्मीद आपसे की जाए? अब अपडेट क्या अब तो फील्ड में देखो यार. अर्ली मॉर्निंग अपडेट कितने सर? 9 AM to 10 AM? है 11:30 में बोल अब तो फील्ड में देखो. अब तो मॉर्निंग एक तो अपडेट होगी ना सर, मतलब आफ्टर मैथ की एक तो आप अपडेट देंगे, सुबह 10 बजे देंगे, 11 बजे देंगे. बुलेटिन तो इशू होगी. Okay, 11 o'clock. 11 o'clock. Okay, sir. ओके Right. सर 11 o'clock सर. 11.